Okay, so now we are starting with the repeated permutation with the repeated entry. Okay, when certain number of things are repeated. Okay, so how do we do that? So this is called permutation. When all objects are not different, not different. Okay, so कैसे करेंगे? So let's see. If I want to arrange the letters of the word, say 5-letter word, give me 5-letter word. A, B, C, D, E. Suppose if I want to arrange this, how many ways you should be able to arrange this? Any idea? Without restriction. How many ways you can arrange the letters of the word? 5 raised to 5. Not 5 raised to 5, I'm sorry. 5p5, which is 5 factorial. Which is 5 factorial. Correct? Agree. Okay, not 5 raised to 5. How it is 5 raised to 5? No. Now let us arrange the letters of the word India. First of all, क्या लग रहा है? Answers बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम होएगा. Now we have कम होएगा. All of you understood that the number of the answer will be less than 5 factorial. इतना clear है सब लोग को? Why? Because if I consider this I1 and I2 different, then my answer is going to be 5 factorial. Agree? If I consider this I1 and I2 different, then my answer is going to be 5 factorial. But अगर वो दोनों same है, so my answer will be reduced by something. Okay. So now let us understand by how much it will be reducing. Okay, very important. By how much it will be reducing. Let us understand that. Okay. So in this 5 factorial answers, okay, there will be like I1 and DI2A will be different than I2 and DI1A. Correct? In this 5 factorial, this will be different, considered differently, correct? Because I1 and I2 consider क्या है. But in India, ये दोनों तो same ही रहेगा. This is equal to this. Correct? ये दोनों same रहेगा. So in every arrangement of I1 and I2, I will exactly have its image. For example, suppose if I arrange I1, I2 and DA would be same thing as I2, I1 and DA. So in 5 factorial, exactly how many things are doubled? Can you tell me? Exactly half of the things are doubled. हर एक का image रहेगा. So in arrangement of letters of the word India, my answer is not 5 factorial. It's going to be 5 factorial by 2. So can you repeat? Okay. So in this 5 factorial words, basically 5 factorial मतलब कितना होता है? If you remember, it's 120. ठीक है? But of all these 120, there will be a duplication. मतलब ये और ये counted differently, but actually eventually they are same. Similarly, this and this counted differently, but actually they are same. So basically, we have counted twice everything. So we have to divide by 2. Okay. So जब भी कोई भी वस्तु दो बार repeat करती है, my answer will be divided by 2. Now let us understand. It's not just 2, it is something else. We will see in the next example. Okay. Now I have this word I N D I A I. Now what is happening here? Sir, it is 6 letters, but 3 of them are identical. Agree with you.
So actually, how many ways you can arrange if it is different? How many ways you can arrange this 6-letter word? Anybody? 6 factorial. Yeah. Agree? 6p6, which is 6 factorial ways. Okay. So कितना duplication हुआ है? Can anyone tell me कितना duplication हुआ है? Three things will be 3 equal. बार. देखो, I1 6. and D I2 A I3 is the same thing as I1 and D I3 A I2, which is same thing as I2 and D I1 A I3, I2 and D I3 A I1, sorry, I1, yeah, correct, which is same thing as I3 and D I1 A I2, which is same thing as I3 and D I2 A I1. कितना वस्तु सेम हो गया? 6. All of them are all of them are same. So divide by क्या करना पड़ेगा? In the arrangement of the India I, in the arrangement of India I, my number of arrangements will be 6 factorial divide by anybody? 6. 6. That's Can I 5 write this factorial. beautifully? 5 factorial. Divide by 3 factorial. Can I write this one? Because 3 factorial is Yes, sir. Yeah, because Is that six- 6-letter word could be written in 3 ways. That's why. okay. Now I want you to understand the same vastu in a different way. In India I, if this I1, I2, I3 ka position within themselves can be arranged in 3 factorial ways. So all of them are will be same. So India I को हम लोग 6 factorial by 3 factorial से divide कर पाएंगे. Okay. Let's go ahead for next question. What about I and D I A I N? India in. इसको अरेंज कैसे कर पाएंगे यार? So this is a 7-letter word, beautiful word है. India in. Okay. तो क्या है इसमें? सर I कितने हैं भाई? I 3 है, no problem. N कितने हैं? सर N 2 है. D कितना है भाई? D 1 है. B1. Correct. And A कितना है? A भी 1 है. So all together कितने words हो गए बेटा? 4. Correct. So, 7 हो गए. come here to ask something. Word 4 हो गए ना? It's off. I don't know what's happening. No, you connect it from your device again. Okay. हाँ, so 7 वस्तु है, 7-letter word है, तो कैसे arrange करेंगे? Can anyone tell me 7 letters word है? तो कैसे arrange करेंगे? I1, Obviously, I2. 7 7 factorial. 7 factorial. But कुछ तो divide होना चाहिए. Can you help me with that? क्या divide होना चाहिए? 3 factorial and 2 3 factorial. factorial into 2 factorial. And 2 factorial. बहुत ही अच्छे. अभी आए हैं समझ में. ठीक है. So जब भी अच्छा न्यू स्टूडेंट जो भी एकदम नया बच्चा है भाई 3 factorial मतलब 3 into 2 into 1. 5 factorial मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and so on. ठीक है? Okay. So 7. So this many ways you can arrange. अच्छा ये बात है तो एक खतरनाक सा वर्ड लेते हैं. बहुत खतरनाक, बहुत हार्ड वर्ड लेते हैं. अरे यार सर why यार? ठीक है चलो let us do this. M कितने हैं? 2. A कितना है? 2. E कितना है? E भी 2 है. 2. H 1. 1. एक है. E 1. E is 1. I 1. I is 1. C is 1. And S और 1. S B 1. And S1. So all together 1, words 2, हो गए 3, भाई? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, wait. 1, 2, 3, 11 4,
6, 7, 8. So 11 Yeah, letter 11. word को 11 factorial. 11 letter word को कैसे अरेंज करेंगे भाई? 11 factorial 11 factorial upon divide by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Don't get tempted and write 8 factorial. थप्पड़ खाएंगे. This is simply 8, not 8 factorial. ठीक है? So you just write 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. That's a number of ways of repeating this. Okay, I think we are ready for iska variations. Okay, now let us understand the variations in this. Okay, so I have commerce लेते, commerce का word लेते, commerce, या फिर एक लेते थे Mississippi. Mississippi बहुत मस्त word है. Let us take Mississippi यार. M spelling बोलो मैं, MISSIPI is SIPPI. Mississippi. Yeah. Oh my God. M is equal to 1. M is 1. अरे M- शांति रखो. मैं बोल रहा हूँ. M is 1. I भैया 4 बार आ रहे हैं. 4. S भैया भी 4 बार आए और P भैया 2 बार आए. ऑल टुगेदर कितना हो गया? 11. कंफर्म कर लो भाई. 1 2 3 4 5 6 7 8 11. कोई मिस नहीं किया मैंने. अच्छा ठीक है. So now how many question is this? In how many ways letters of the word Mississippi can be arranged? If number 1, no restriction. If there is no restriction, how many ways you can arrange the letters of the word Mississippi? Anybody? 11 factorial. 11 factorial. Divide by 2 factorial. 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial. अभी आप मेरे स्टूडेंट हैं तो हमेशा नीचे लिख देने का, ये भैया I के लिए है, ये S के लिए है और ये P के लिए है. ठीक है? You are my student, so you will always make perfect, एकदम clear. वॉचमैन भी बिल्डिंग का आएगा, उसको भी समझ में आना चाहिए. अरे हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया. वेरी गुड. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. नो रिस्ट्रिक्शन ऐसे करेंगे. नाउ इफ आई वांट माय vowels are together. Vowels, do you remember this? Vowels are together. You remember कि नहीं? Yes, so we take them as one. Always together. क्या हैंडराइटिंग है आज, मतलब क्या बना है? Okay. Vowels are always together. Vowels are always together मतलब क्या? याद करो, मैथ्स क्या करते थे उसको? consider them 1 unit. consider them 1. Okay. So कितने vowels है भाई इसमें? यही vowel है बस. So consider all group of 4 vowels as a one person. Okay. And consonants कितने बचे हैं? Sir, all together 7 consonants बचे हैं. 4 S, 2 P's and 1 M. All together कितना पब्लिक हो गया? तो चलो let us count it. कितना पब्लिक हो गया? 1 8 2 3 4 5 6 7 और ये भैया एक 8 people. अरे यार, where is my yeah. So this 8 people, how do you think 8 people can be arranged? Can anyone tell me? 8 factorial. 8 factorial. 8 factorial ways. कुछ और भी बोलो भाई. 8 factorial ways divided by into 4 factorial. Into 4 factorial. Into 2 factorial. Q. Because Repeat correct. Because S and P all eyes are that's same. one person, right? So we're not considering. Correct. There are 4 S's on this side and 2 P's on that side. So for S I have to divide and for P I have to divide. Now remaining 4 can be arranged within 4 factorial, but 4 all of them are factorial. identical. So divide by 4 factorial. Basically this is for I's. ये काउंट नहीं करता है इसमें. ठीक है, वो 1 ही होता है, इसके लिए काउंट नहीं करता है. Now let's go ahead. वो लिखना सर बाजू में. नहीं, ये लिखा नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन तुम लोग मेरे स्टूडेंट है यार, तुम लोग समझा करो. परफेक्ट बनना है कि नहीं? 100 चाहिए भाई. बनना. ऊपर स्क्रॉल करो ना. अच्छा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ. 2 मिनट रुक जा. हाँ अभी बोल.
हाँ बेटा, हाँ हाँ ना. अच्छा, you are calling me. You want me to come inside? एक सेकंड ना बच्चा. बोलो. Very nice. Now make something nice. चलो, हैरी पॉटर चालू है भाई बन लोग का देखने का. तो हर रोज दिन में 25 स्पेल सुनता हूँ मैं. रिकॉर्डिंग चालू है सर. अरे आई एम सॉरी. है अभी बच्चे हैं तो है घर में और स्टार्ट रिकॉर्डिंग है घर में. यस ओके. सो नाउ वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. जिसको देखने का था उसने देख लिया. ओके, सो नाउ वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर के बाद नेक्स्ट क्या आता है? एनीबॉडी? वॉवेल्स आर together. Never together. Together. नेवर टुगेदर. So we can also write these short forms for vowels. एक मिनट. नेवर टुगेदर मतलब also means no two vowels are together. No two vowels are together. No two vowels are together. Vowels are never together. मतलब क्या करते थे? बोलो, इज्जत से बोलो, क्या करते थे? What is the mathematics? So we used to throw them out. Very good. Throw them out. Throw them out. So vowels को बाहर फेंक दिया. So if I remove this 4 vowels outside, तो consonants कितने बचेंगे? There are 7 consonants altogether. Okay. So 7 consonants can be arranged in how many ways? So 7 consonants can be arranged within themselves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 consonants can be arranged within themselves in how many ways? Anybody? 7 factorial. 7 ways. factorial. Divide by 4 factorial into 2 factorial. बहुत अच्छे. ये फर्स्ट वाला 4 किसके लिए है? S के लिए है और ये P के लिए है. एकदम क्लियर है. Now call vowels back. How many places are there for vowels? इज्जत से बोलो. Vowels के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 places for 8 vowels. factorial divided by 4 factorial. So how many ways vowels can be arranged within themselves? Can you tell me? So yeah, anyone tell me? 8 factorial. 8p4 ways. Divide by 4 factorial. बेटा 4 identical वस्तु है, वो तो भूलना ही नहीं है. 8p4 divided by 4 factorial, and this one is for i's. ठीक है. हम थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ. I want my next answer to be here only. Okay. Next. Sir, I had a doubt. Yes, beta, bolo. Sir, I didn't understand why do you have to divide it by 4 factorial into 2 factorial? Okay, so here or here? Here or here? No, the left one. Here. Okay. Obviously ना. बेटा देखो आपके पास M है, S S S S P P I, no, S S S P P है, बराबर है. ये कितना वस्तु है बेटा? 7 वस्तु है ना. If you arrange this 7 thingy, you will do 7 factorial, but divide by this 4 factorial and divide by this 2 factorial करना ही पड़ेगा ना. Correct? हाँ. Are you getting it? हाँ सर, but क्यों करना है? जो भी रिपीट करते हैं ये वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था. आप अभी ज्वाइन किया क्या? नहीं हूँ पहले से ही. तो इफ यू रिमेम्बर इंडिया में 2 अगर आई आ गया तो वी डिवाइड बाय 2. इंडिया आई में वी डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बिकॉज आई 3 बार आया. वैसे इंडिया आई इन में वी डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. व्हाई? बिकॉज आई भी रिपीट किया है और एन भी रिपीट किया है. इन शॉर्ट जो भी रिपीट किया है और जितने भी रिपीट किए हैं वस्तु उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं हम लोग. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ऑल दिस व्हाइल. Understood, sir. Even here
basically it's a subpart of the sum, right? Where you are arranging 7 thingy, but 4 of the thingy and 2 of the thingy are identical, so you have to divide by that. Okay? Okay, sir. And Thank you. Then once you arrange them, there are 8 places and 4 identical, so divide by 4 factorial. Okay. Now next part is all vowels are never together. So let me write that. All vowels. What? So what is the difference between the all vowels are never together and all vowels are never together? Can anyone tell me? So around 3 vowels can be together, but not 4. Correct. All vowels are never together. Matlab, you can have 2 together. Matlab, you can have I, and then, will do. Or you can do, okay. So all vowels can be together. You can have 2 vowels together. You can have 3 vowels also together. But साले 4 के 4 साथ में नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. So don't you think this is exactly ulta of vowels are always together? हाँ यार, this is exactly ulta of the second case. So how you should do? You find out all possibility, that is no restriction, minus vowels are always together kar do. And that's what we are going to do. All vowels are never together means simply first answer minus the second answer. Sir, I understood this. Completely all of you understood? Okay. अभी हम लोग नेक्स्ट वस्तु जो करने वाले हैं. So why will it be first answer minus second? Okay, what is the first answer? Can you tell me what is the first answer? All possibility, isn't it? Yeah. What is the second answer? Vowels are always together. So all possibility में से always together निकाल देंगे. What you will get? All never together. That's what we want. Yeah. Okay. Yes, that's maths. Okay, instead of doing that donkey work and getting the answer, you can be little smart and get it. Okay. Now, what we are going to do is the next part where we are going to arrange these words. What really? Yeah. We are going to arrange the letters of the word. I think this was there in the textbook in 8.3 exercise. I don't know why we didn't do it that time. Arrangement of the letters of the word. Yes. Zenith का spelling आता है क्या? Zenith. ZENITH. Okay. So now we are going to arrange the letters of the word zenith. Okay. So arrange the letters of the word ZENITH. Are you all with me? Okay. इसको arrange करेंगे. And results are arranged and all results are arranged dictionary manner. What method? क्या बोले? Dictionary manner. उस dictionary manner को क्या बोलेंगे? Dictionary. Alphabetical order. Dictionary मतलब alphabetical ABC order. Chronological order. ABC order. मैं dictionary लिखूं तुम लोगों को चलेगा क्या? Dictionary manner चलेगा? चलेगा कि नहीं? हाँ सर चलेगा. अभी तो समझ में आ गया. चल जाएगा. Indirectly you mean to say alphabetical order only. All results are arranged in a dictionary manner. Then and if then what is the rank of? Seriously? मतलब are you really asking this question? Yes, बच्चा लोग, I'm asking you this question. तो जेनिथ का रैंक वो अरेंजमेंट में कौन सा होएगा वो पूछना है.
ये टेक्स्ट बुक ने कैसे किया मेरे को पता नहीं. आई हैव अ मस्त वे ऑफ सॉल्विंग. Sir, I have a doubt. What is meant by rank? हाँ, तो अभी देखो मैं बताता हूँ. जेनिथ का सबसे पहला वर्ड क्या आएगा मालूम है? मैं बताता हूँ तेरे को. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Okay, yeah. So first जो वर्ड बनेगा वो बनेगा E H I N N T Z. सेकंड जो वर्ड बनेगा E H I N Z T. थर्ड जो वर्ड बनेगा E H I N नहीं आएगा, ये आ जाएगा ZNT. नहीं ZNT नहीं, TNZ. बाद में EHITTZN. Oh my God, really you are going to? By the way, sir, आपको पता है if you arrange the letters to the word zenith, you will get 6 factorial ways. Basically, it is how much? 120 into 6. कितना होता है? 720. 720. 720 ways possibilities. आप all 720s अरेंज करेंगे, उसमें से बाद जेनिथ निकालेंगे, उसका पोजीशन नहीं भाई, हम लोग दिमाग लगाएंगे. See, maths is all about दिमाग. ठीक है, मेरे को सिर्फ जेनिथ का ऐसे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. दो जिसने पूछा था रैंक का मतलब क्या है, ठीक है, तो ऐसे ही अरेंज करते जाएंगे. ओह माय गॉड, रियली ऑल टुगेदर देयर विल बी 720. तो उसमें जेनिथ का रैंक कौन सा है वो पूछा है. ओके बॉय. What is the meaning of the word rank in this? अरे यार अभी तो बताया. ठीक से सुना नहीं सर. हाँ, तो वापस अभी ठीक से सुन और बोलना कम करो. EHINTZ का रैंक क्या है? इसका रैंक 1 है. ओके, पोजीशन मतलब रैंक मतलब पोजीशन. EHINZT का रैंक 2. EHITNZ का रैंक 3. EHITZN का रैंक 4 एंड सो ऑन. वैसे ही जेनिथ ZENITH का रैंक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है. ओके, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. ओके, सो एनी गेसेस कैसे करेंगे? चलो मैं यहाँ पे लाइन करता हूँ एंड दिस इज द सॉल्यूशन. Can you help me? How do we go about doing this? So do you do total possibilities minus words that rank below zenith? That's a one way of doing it. Yes, total possibility is 720. But how do you find rank number of words after zenith? So that is also a big task. It's the same thing to do. वही इतना ही टाइम लगेगा. आप ये मेथड से करो या वो मेथड से करो. So now I'm going to show it to you how we are going to handle. Anybody would like to try? ऐसे बहुत सारे स्मार्ट बच्चे अपने पास. Come on. सुहानिया, आर्यन, सुप्ति. So do you do like first letter is Z, second letter is a letter after E, then so on and so forth? So possibilities for the first position is 1. Second one would be anything after E. Say it again, beta. वापस बोलो. Can you tell me again? So for the first position, the possibility is 1 because it has to start with Z, because Z is the last one. Okay. Second one would be letters after E, so that's 4. Okay. 4 possibilities. So थोड़ा देखते हैं कैसे करते हैं बेटा. What you are saying is उसको थोड़ा ही उसको ही modify करेंगे हम लोग. Yeah, what you want to say? Butter. Okay. So let's see.
So चलो जेनिथ के पहले कितने वर्ड्स फॉर श्योर चले गए जिसके स्टार्टिंग में कितने वर्ड्स Z पहले नहीं है. हाँ जिसके स्टार्टिंग में Z नहीं है. सो बिफोर द फर्स्ट वर्ड ऑफ Z, फर्स्ट वर्ड इन द रैंक, उसके पहले कौन कौन से वर्ड्स श्योर चले गए हैं. तो उसके लिए क्या करने का बेटा, ये देखो EHINTZ. तो Z के ऊपर की कितनी वस्तुएं वो काउंट करो. 1 2 3 4 5. So 5 into this 5 could be anything. So 5 factorial. So basically number of words before first letter, before letter Z, before first letter Z will be 5 times 5 factorial. Because see, all the words which starts with E will be before zenith for sure. All the words which are starts with H will be before zenith. All the words which start with I will be before N and T. So basically, how many words starts with E? So altogether 5 factorial words start with E. 5 factorial words will start with H. 5 factorial words will start with I, and so on. So altogether, it is 5 times of 5 factorial words will start before the first letter Z word. Okay. So once you understand this technique, okay, उसके बाद ये उड़ा देना Z उड़ा. Okay. See, first letter zenith है, बराबर है. तो zenith का फर्स्ट लेटर क्या है? ZENITH है. ठीक है. तो इसके पहले डेफिनेटली E वाली सारी सीरीज आ जाएगी, है ना. So how many are there? 5 factorial are there. H वाली भी सारी सीरीज आ जाएगी. हाँ यार. And likewise I and so all together basically 5 times 5 factorial की सारी सीरीज आ जाएगी. Because ये 5 है ना, तो उसकी पूरी सीरीज जेनिथ के पहले आ जाएगी. Okay. Now zenith के Z आ गया हम लोग. We reached Z. So number of words. Now understand the question. After Z and before ZE will be. So look at this line. Look at this. और इसमें देखो कि where is my E? E के पहले कितने words हैं? सर E के पहले कोई भी नहीं है. So don't worry. That means ZE will be the first word and it will be 0 into 4 factorial. Okay. Number of words अभी clear हो जाएगा. After ZE and before anybody? ZEN. Sorry, मैंने E नहीं उड़ाया, E भी उड़ा देना चाहिए. मुझे कुछ बिजी लगा है और तो मुझे देखो तो अच्छा है. मैं आता हूँ 2 मिनट में. तो ये जेनिथ को खत्म करके आता हूँ. हाँ. ओके. इसको फाइट करके आता हूँ मैं. ओके. 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 हाँ. तो ZE और ZEN के पहले कितने वर्ड्स हैं? तो जरा देखें. ZEN के पहले ऑब्वियसली सर वहां पे आएगा ZEH वाले वर्ड्स आएंगे. वो कितने हैं? वो 3 फैक्टोरियल है. एंड ZEI वाले वर्ड्स आएंगे, वो भी 3 फैक्टोरियल है. So number of words will be before ZEN will be anybody? 2 into 3 factorial. बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे. अगर ZEN हो गया तो N उड़ा दो. Now anybody will tell me how do we go about
जिसने आंसर दिया वो तो डेफिनेटली बोल सकता है मेरे को. नंबर ऑफ वर्ड्स आफ्टर ZEN and before ZENI. Can anyone tell me? Will be? बोलो. So 3 into 4. So ZENI के पहले ZENH वाले तो डेफिनेटली रहेंगे सर. So ZENH वाले कितने वर्ड्स हैं सर? वो 2 फैक्टोरियल वर्ड्स हैं. करेक्ट. So only ZENI के ऊपर एक ही वर्ड लिखो. I के ऊपर एक ही वस्तु है. When you look at this chart, don't look at E. साला E तो नहीं हो सकता है ना, because ZE तो आ चुका है. तो I के ऊपर सिर्फ एक ही बचता है. So number of words can come before after ZEN and before ZEI will be ZEN 1 into 2 factorial. which will be 1 into 2 factorial. और perfect है. Number of words अभी समझ में आएगा मैथ्स. ऐसे करेंगे ना तो पूरा समझ में भी आता है. ZENI after ZENI and before ZENIT. Can anyone tell me? एक मिनट, मैंने कुछ नहीं उड़ाया. कौन सा नहीं उड़ाया? I नहीं उड़ाया. Okay. Will be 1 into 1 factorial. So definitely girl was saying right. ZENIT के पहले ZENIH वाला वर्ड तो होएगा ही होएगा, which should be 1 into 1 factorial. Okay. Then lastly, number of words. एक मिनट, मैंने क्या नहीं उड़ाया? 3 नहीं उड़ाया. Number of words after ZENI before ZENITH will be, ये लिखने का जरूरत नहीं है, 0 times because that's the last word into 0 factorial, which is 0 1 2 6 6 2s are 12 0. This is how much? 600. Now 120 into 5 600. Okay. 25 कौन बोला रहे? Sorry, गलती. 12 13 14 15 615 words are before zenith. Therefore rank of zenith will be, oh my god, seriously इतना टफ था भाई. एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो आपको सम कर सकते हैं. Now I want you to apply same thing for Sachin. सचिन करेंगे या मदर करेंगे? जल्दी बोलो. हाँ, मदर करेंगे. चलो ओके फाइन. MOTHER और रैंक ऑफ मदर निकालो उसमें से. Arrange the letters of the word mother and get me the rank of mother. Those who are doing at home, watching the video, please give an attempt on this. Okay, so those who are doing at home, please pay attention how we are going to do this. What is the expected answers? क्या लग रहे हैं सबके आंसर्स? क्या आ रहे हैं? 40 somebody said 40. So I got 429. I got 309. I got 309. Even I got 309. 309 is there. बाद में 429 is there. ठीक है, ये चलो ये I got rank as 345. So I got it as 309. 309. Okay. बाद में किसको मिला? 349 किसको मिला? 345 sir. 345. Okay. देख लेते हैं. और कोई any other answer? Please let me know. I will write it down, and then we can verify. Okay. So very clearly,
मेरिट अमिश क्लास में हूँ, मैं फोन करता हूँ. Number of words before the first letter of M will be, बोलो anybody? 2 into 5 factorial. 5 factorial. Very clear. And before M and after M and before MO, M को उड़ा दो, and MO तो आएगा will be 2 into 4 factorial. Then आएगा after MO and before MOT. So एक मिनट, मैंने क्या नहीं उड़ाया, 0 नहीं उड़ाया. Okay, so that will be 3 into 3 factorial. Then it will be MOT and MOTH के बीच में क्या है, तो मैंने क्या नहीं उड़ाया, 3 नहीं उड़ाया. Okay, so MOT और MOTH के बीच में आएगा 1 into 2 factorial. Then MOTH और MOTHE के बीच में क्या आएगा सर? MOTH और MOTE के बीच में कुछ भी नहीं आएगा. So it will be it will be 0 into 1 factorial. And last में आएगा MOTHE. लास्ट का लिखने का जरूरत नहीं है, which I told you. HER will be equal to 0 into 0 factorial. So finally this will be 0, 2, 6 3s are 18. This is 24, 48. Is that right? Yes, sir. And this will be 120 into 240. 240. So 240 and 20, 260, 260, 308. So the rank of mother will be 309 is the rank. Okay, fine. अगर 429 आया मतलब अपने फर्स्ट स्टेप में मिस्टेक कर दिया है शायद. Yes, I wrote 3 factorial. I wrote 3 into 5 factorial instead of 2 into 5 factorial. ठीक है, कोई इशू नहीं है. So this is how you will learn, बेटा. ठीक है, mother को arrange किया, letters of the word mother. And now what we are going to do, homework for this topic. Up to now, it will be all solved example before 8.4 and exercise at 0.4. Sorry, solved example before 8.4 आपको read and understand करना है. Do not write it. And exercise 8.4 आपको करनी है. Okay. Again, doubts will be handled in the next class. Okay. Okay. Now, अभी हम लोग combination चालू कर रहे हैं. And very clear understanding के साथ you should understand the difference between the permutation and combination. Okay, so the difference, so let's see combination first. Let me write that. Okay, now what is the difference between permutation and combination? First of all, you understand combination मतलब सिर्फ select करना, जैसे कि और choose करना. Okay, जैसे कि you want to make a committee of 4 people out of given 10 people. आपने 4 जन को सिलेक्ट किया, बट उसके बाद उसको अरेंज नहीं किया. सी in 10p4 ways this was giving you arrangement. A B C D will be different than A. I mean, first of all, obviously you will select 4 people out of 10 people, and suppose if you select the first 4 only, A B C D, let us, okay, then A B C D and A B D C, then A C B D, then all that will be considered different in permutation. But in combination, 10C4, which we call it, will be all of them are considered same. What is important here is
that the order in which they are written, that's not important. Okay? The order in which they are written after the selection, that's not important. Abhi, if I want to select a committee of 4 from your class, okay, so if I select 4 people, abhi, does it matter कि मैंने सुहानिया को first select किया या 4th select किया? नहीं, she's there in the committee, suppose. So it doesn't matter कि भाई उसको कभी select किया है. Okay, so 10C4 is just number of ways of selecting. So what is this answer? Let us write a definition, formula definition. NCR is number of ways of selecting R object from given N. वहां पे word selecting नहीं था, वहां पे था arranging था. Okay, what is the formula of NCR? NCR will be equal to n factorial divided by n minus r the factorial into r factorial. मेरे पुराने students को ये familiar रहेगा. We have used this in which topic? Binomial theorem. Binomial theorem. We have used this very much. Okay. So don't worry, it's nothing great in the topic. We are going to use it again. So 10C4 will be what? Sir, that will be 10 factorial divided by 10 minus 4, which is 6 factorial, into 4 factorial, which will be nothing but 10, 9, 8, 7 into 6 factorial divided by 6 factorial into 4 factorial. 6 factorial चला जाएगा, and you will get 10, 9, 8, 7 divided by 4 factorial, and then that's your answer. So what about 9C3? Sir, that will be the long formula तो आपको मालूम है, 9 factorial divided by 9 minus 3, which is 6 factorial into 3 factorial. But shortcut would be much easier. How? So write 3 numbers divided by 3 factorial. See, look at this. Okay, I'm understanding a little bit. What will be NC3? Sir, NC3 will be n minus 1, n minus 2 divided by 3 factorial. Lovely, sir. This is very simple. Okay, now my next question is, what will be NC1? N objects में से मेरे को एक object select करना है, तो क्या रहेगा? So that would be simply n. Okay. And if you use definition, this will be n factorial over n minus 1 factorial into 1 factorial, which will be n into n minus 1 factorial divided by n factorial, and finally answer is n. What about NC0? अगर 10 में से एक को भी नहीं करना है select, so then also you have one option, don't select anyone, which is n factorial divided by n minus 0 the factorial into 0 factorial, n factorial by n factorial into 0 factorial, which is 1. What will be NCN? Sir, मेरे को 10 public को select करना है from a group of 10 people. भाई सब लोग चलो. It's only one way, correct? N factorial divided by n minus n the factorial into n factorial, which is n factorial by 0 factorial into n factorial, which is one way. Okay. Interesting. तो ये वस्तु आपको याद रखनी चाहिए. What are these? NC1 is 1, NC0 is 1, sorry, NC1 is n, NCN is also 1. Okay, fine. Now, थोड़ा जगह है तो और एक वस्तु कर देता हूं. The theory says NCR is same thing as NCN minus R. Now that is very much clear by if you apply the formula. This is very much clear. But अब understanding करके देखो, मेरे पास 10 public है, उसमें से I want to select 2 people.
no, the other way around. 10 people में से मेरे को I want to select 8 people. I can do that in हाँ भाई तू आजा अच्छा तू बहुत स्मार्ट है चल आजा ठीक है तू भी आजा अरे हाँ ठीक है तू भी आजा. Or I can select 2 people for rejection. Don't you think I can select that the same task I can do it? तू घर पे निकल. Are you getting it? So 10 में से 8 को सिलेक्ट करो is the same thing as 10 में से 2 को सिलेक्ट करो for rejection. So number of ways is the same. If you apply the formula, it is pretty simple. 10 factorial divided by 10 minus 8. 8 factorial into 8 factorial, which is 10 10 factorial. factorial 1 2 factorial. 10 into 9 into 8 factorial. मैं बोल रहा हूँ बेटा 10 minus 2 the factorial into 2 factorial, which will be 10 factorial divided by 8 factorial into 2 factorial, which is the same thing. So formula wise तो समझ में आ रहा है, but argument wise भी आप समझ लो. 10 में से 8 को सिलेक्ट करना is the same task as that of 10 में से 2 को सिलेक्ट कर for rejection. That's a very good result. दूसरा एक रिजल्ट है, चलो दूसरा रिजल्ट क्या है? ये वही बंदा ने जो किया था वो पास्कल बंदा ने ही काम किया था. ये many people write it in a different way. I'll write it in my own way. So समझो मेरे पास n objects हैं. So A, B, C, likewise. Suppose there are 10 people. D, E, F, G, H, I, J. 10 पब्लिक हो गए. ठीक है. So ये 10 पब्लिक हैं. And I want to select 4 people. How many ways you can do that? Sir, that will be very simple. 10C4 ways. Agree with you. Completely agreement with you. But for example, इसको अलग तरीके से कैसे करेंगे? एक बंदा ले लो अपना आर्यन तलरेजा. आर्यन, boy, you are listening? हाँ sir. Okay. आर्यन. Boy name is आर्यन. तो आर्यन के लिए 2 ऑप्शन होएगा भाई कि भाई he is there in the committee or he is not there in the committee. Suppose if he is not there in the committee, तो बाकी के 9 में से कितना कर सिलेक्ट करने का? सर बाकी के 9 में से 4 सिलेक्ट करने का. Very clearly, because finally committee need 4 people. And suppose if he is there in the committee, तो बाकी के 9 में से कितना सिलेक्ट करेंगे? 3 सिलेक्ट करेंगे. 3. इसका प्रूफ बहुत सिंपल है. Okay, but this what we have done, we call it, this way of proving is called argumental way of proving. Okay, consider a person 1. उसके लिए 2 ऑप्शन हैं. He will be there in the committee or he will not be there in the committee. ऐसा. So there are 2 ways you can argue this. Now इसको लिखा कैसे है बच्चे लोगों ने? I mean सब लोगों ने. ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि NCR will be equal to n minus 1 CR plus n minus 1 CR minus 1, या फिर n plus 1 CR plus 1, let me write this way, will be equal to n CR या फिर n CR minus 1. I think they must have written this way. कैसे भी वे यूज करो, it depends what is your n. So this is called Pascal's identity. Okay. Now आज के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं. सिर्फ NCR का फॉर्मूला. ओके, नहीं तो नए बच्चे लोगों को चक्कर आ जाएंगे. Friday we are going to give a full stop to this permutation combination, a very long topic. We are going to udafy this topic on Friday. ठीक है.
सो होमवर्क में क्या रहेगा, ये पेज पूरा लिखना है. ओके, राइट एवरीथिंग. सो राइट दिस. ओके, एंड ये होमवर्क तो है ही है 8.4 का. ट्राई करना ऑनेस्टी के साथ. यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट? मैं पीडीएफ में दे ही दूंगा बेटा आपको. ओके, सो ये हो गया, ये हो गया. अभी आज कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाई की अपन ने. सारी पेज 5 पेज भाई. एक ये अच्छा ठीक है, पहले ये कंसेप्ट थोड़ा भारी था ना, वो कंसेप्ट कर लिया. ठीक है, अच्छा ही किया. अच्छा, अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. मैं ड्राइव पे किधर डाल रहा हूँ? ड्राइव पे नहीं रे, ड्राइव पे नहीं. चलो व्हाट्सएप पे डाल देना बेटा. यस सर. ओके. सर न्यू स्टूडेंट्स को संडे के होमवर्क में कुछ डाउट है तो आप उनको होल्ड करा के उनका डाउट. हाँ, अभी मैं आई एम गोइंग टू स्पीक टू न्यू स्टूडेंट्स ओनली एंड दोज हु हैव डाउट फॉर दिस एग्जाम. ये टॉपिक में इसमें कोई डाउट रहेगा तो प्लीज स्टे बैक. इवन इन ट्रिको इफ यू हैव डाउट्स प्लीज स्टे बैक, एंड इफ यू डोंट हैव डाउट्स वी कैन. हाँ बेटा, ये टेस्ट खाली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है ना? नहीं भाई, अभी सबके लिए आने वाला है ना. आपको ये वीक में छुट्टी इसके लिए दे रहा हूँ कि आपका स्कूल के एग्जाम चालू है, राइट? सर जेएनएस असाइनमेंट्स ले रहे हैं अभी 1 महीने के लिए. क्या टॉपिक दिया है बेटा? 15 सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस है जेएनएस का. अरे यार बहुत पकाओ टॉपिक है यार. हाँ सर, हमने बाइनोमियल के साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स चालू किया है, उसके साथ ही कुछ पता नहीं क्या दैट इंडेक्स नंबर का स्टैटिस्टिक्स चालू किया है. तो हमने सेक्शन से का स्टैटिस्टिक्स चालू किया, ऐसा कुछ चालू किया. हाँ. Yes, so we started with quatas. So stats मतलब क्या, they are winding up the syllabus for your exam. Okay, fine, good. So what we will do is एक permutation combination खत्म होने के बाद next week से हम लोग stats उड़ा देंगे. And JNS के लिए all JNS students we will be having a class for only you people for your RNF relation, set relation and functions में. ठीक है? Today I want only those students who have a doubts and difficulty in linear, quadratic and complex में. Okay, बाकी सब जा सकते हैं. Finish the homework. तो जानवी, सब लोग होमवर्क दे रहे हैं ना टाइम पे? ओके सर. लास्ट टाइम 8.3 का काफी लोग ने सबमिट किया सर. नॉट ऑल ऑफ यू बट सम पीपल है. ओके फाइन, ठीक है. डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग. Those who are especially new students, please stay back. So thank you. Bye sir. Bye बच्चा. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you Thank you sir. sir. Thank you. अरे रुको रे. चलो. Bye बच्चा. sir. Bye bye. Bye बच्चे लोग. So I Sir, want I had only a doubt. students. Laksh Lakhani, yes, you are new kid. You will wait. Yeah. So for tomorrow, the JML ka yesterday's test we're getting the marks tomorrow, na? Tomorrow or Friday. Then you will discuss the sums now of those test ka. Yeah, we can discuss that also there. But all the sums are very easy. I didn't get so usme. What are you saying? What you didn't get? What did you get? Alpha beta relation. Alpha beta का.
अरे Relation यार relation वो alpha is equal to beta minus 1 वाला. तू खाएगा. So alpha minus beta का फॉर्मूला नहीं आता है आपको. So alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta का root. So by looking at the equation you can find alpha minus beta, alpha plus beta and alpha into beta. हाँ. तो डालना है तो मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा. अच्छा. ट्राई कर, अभी कभी ट्राई कर. So अभी सम नहीं है वो टेस्ट का. ठीक है, ट्राई करो. ओके, नए स्टूडेंट सारे के सारे कैमरा ऑन करो फटाक से. So should I stay? तू भी तो नया है बेटा. Okay. This is on the camera. लक्ष लखानी डाउट्स है? क्या है डाउट्स? हाय नायर, सिस्टर मस्ती कर रही है तो बोल देना, होमवर्क दे दूंगा मैं इसको. सर 7.5 का 11th क्वेश्चन. Okay, so I don't have, let me just get out. 7.5 11th question. I think if you have not understood, then they must have cancelled. It's that's show that the expression this can have a value anywhere. Correct that question? Yeah. So that is removed. So don't worry, that won't be asked. So the last 3 questions are not there. They have the same types. That's why. Yeah, they are not there. They changed Sir, syllabus. 1 घंटा ध्यान सुबह मैंने वेस्ट किया इस पे. अरे बाप रे. But मैंने वीडियो में दिखा है ये. If you want, I'll solve for you. No, I don't need only. नहीं जरूरत नहीं. नहीं. भाई बाकी सब लोग किधर गए? समय. Sir. I'll practice all the sums. Like I'll practice all the sums today and stuff. So I don't really have any. Very new girl है ना ये, very new girl है. हाँ, new girl. मेरी बात सुन. Calm down. First calm down. ऐसे फटाफट घाई में मत कर, नहीं तो नहीं होएगा, चक्कर आ जाएगा. So what you need to do is see the video, linear का and quadratic का. मेरे दो वीडियो दिया है शायद. जानवी दोनों दिया है, पुराना वाला भी दिया है ना? हाँ यस सर, मैंने सेंड किया है. इनफैक्ट हाँ, वो पुराना वाला है ना, वो डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है, तो यू मस्ट गो थ्रू दैट. ओके, पुराना हाँ, एंड नया भी दिया है. Naya is a revision when I was doing it with new kids, which you missed. ठीक है, तो वो करना है. वो दोनों होने के बाद you attempt the sums without hesitation. में ऐसा घाई में फटाक से सम पकड़ लिया ना, चक्कर आ जाएगा. मत करना. It is always advisable to go through the video and then only touch the sums. ठीक है? Okay, yeah, I'll do that. Ashay, how are you doing, beta? How are you? I'm good. कैसा चल रहा है? समझ में आ रहा है सब? हाँ सर, आ रहा है, सब समझ में आ रहा है सर. एक 6.4 में एक डाउट था सर. मैंने वीडियो देखा था. Janvi, how do we